seen so many different types of communication. There are shifting natures of communication involved in interpersonal communication. And it's just not about, we are talking about uh, soft skill kind of thing, you see, but uh, we are talking about how interpersonal communication is in fact a matter of our workplace needs, and then it is a matter of our own personal lives, social lives. So both these things, work and home dynamics, are involved in this today's talk. And if you look at the developments for the last 20 or 40 years, I mean, let me give you, for the last 30 years, you will find that uh, this is an age of knowledge transformation. And to this point, Peter Drucker, very famous person in the field of management, you know it, he has mentioned that this is an age of social transformation in his book in 1994. And we all become knowledge workers because we work in different frames. We are multitasked. And therefore, we need to be seen in terms of critical thinkers and creative thinkers. And as you know, this is not a very uncommon subject. Interpersonal communication, earlier we used to talk about communication skills. And since you are all expert faculty from different disciplines, I hope you are all coming from different disciplines, sciences to social sciences, humanities. Yes, sir. Yes, 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 sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. yes. yes, sir. Yes, sir. So people coming from different discipline, uh, you can see that how interpersonal communication is matter of not a discipline centric phenomena. It is a matter of you know, of our day-to-day lives, where work, and it connects from work to home, home to work. It connects from friends to family. It connects us from office to family. Everything is there. So you know all about communication skills. You are experts because you are dealing with students, and you have been giving all workshops, seminar, conferences, and all that. You have been representing your institutions, right? But why interpersonal communication? Because of the other factors that are involved. Because there is a factor of life around it. And communication has been overloaded with new concepts of thinking, of being sensitive to needs of communication, empathy, compassion, understanding each other, and then working in different kind of uh, uh, positions and in different settings. So when we see the nature of shifting demographies in the wake of technological interventions, a lot of technological interventions are there, and there are changing faces of organizations. We come from university, you come from university, from colleges. It's changing very rapidly. New developments are taking it over. Now, interpersonal communication is one of the key feature of interpersonal communication is that how to get things done, and that too in a very nice and sophisticated way.
where talk is uh, the work of organization, talk is not being done more. And without talking, interpersonal communication doesn't happen. But with the coming of technology, the problem that I'm trying to share with you is that with the coming of technology, we find the disappearing face of talk. We are all the time busy with our mobiles. We meet friends on mobiles, right? So there is a challenge that is involved, and this challenge always gives us doing team projects, teamwork, managing conflicts and resolutions. All these are, and then the performance that is needed is from us is of inclusive nature, right? So uh, just so sorry. So this is one of the features that uh, gives us a kind of an interface between where we can't communicate and where we can communicate. And this interdependence of communication with other factors, uh, you have to learn the ropes by way of mentoring, by way of coaching, by way of being a counselor. We are performing different roles now, right? And all the time, these interpersonal initiatives are very important. It's getting integral to our lives. Our managerial capabilities depend upon interpersonal communication skills. Our administrative capabilities depend upon interpersonal skills. Our uh, classroom competence also is depending upon interpersonal skills. And uh, you see, over the last years, the articles that has appeared in New York Times, Wall Street Journal, or USA Today, or The Week, they are all international magazines in circulation, even in Times of India, even in Hindustan Times or The Hindu. You will find that the emphasis has been on how to negotiate, how to resolve a conflict at workplace. And we have to work well with people around us in an inclusive manner. This is a challenge also, because if you look at the a report in a US Commission on Labor report that was done in 1991. So they emphasize that it's the speaking part, is the listening part more important, like reading and writing. And when you have these kind of things involved, that the success of a manager depends more on communication skills. What happened that there was a data in US where they believed that all the graduates coming from management graduates, MBA graduates, they have good knowledge of the subject. They are well trained in their areas. So what do we test for? We can test for their communication skills. We can test for their interpersonal communication skills. So that became the backbone, because many business organizations, you know, they are doing their best in the area. But in US, this data came up that business organizations were asked to teach communication skills effectively. And when they started teaching communication skills, they found that it is the interpersonal communication skills lacking. So uh, this was evident, when there was a television serial, somewhere in 2004, The Apprentice, and it was viewed many times. And this was on a business kind of a,
what you call, you can say that all the episodes were done on a business uh, developments, how business is grown. And the idea of apprentice became very popular because of Donald Trump. And from there, that use became very evident, Trumpism. So that particular moment where uh, they thought that, well, we teach in management planning, we teach public speaking, we teach basically the concepts of management are planning, organizing, commanding, controlling, coordinating. These concepts are there, but these concepts, they heavily depend upon communication skills. So then they shifted to this kind of structure of communication, team building. They shifted to interpersonal team building, multitasking based on communication. And whatever skills they were teaching, they integrated it with communication skills. And that's why you will see that a magazine published from USA, Training, in 1999, where 80% of the US companies were giving training to their employees on communication skills. And it is also there in our Indian Institute of Management also, which is one of the reputed, one of the high, very great organization of a very high repute, that they also emphasize on giving training on interpersonal communication skills. They spend a lot of energy investment on how to be a good communicator. So when we see all these kind of developments, right, but there are different kind of challenges that we face. That once a time when business schools were criticized for not including communication skills on their course or on their agenda, technology intervenes. And before we talk about the next section, that what are the challenges and what are the strategies, right, in building up intercultural communication skills, or uh, talking about persuasive communication skills, or talking about negotiating communication skills, all these things, right? I would request you to go through you see, Google form. Just you can fill it. It is a very short form, which will give us precisely the idea as to just give me a second. Can I just paste this link? Did you get this link? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is Yes, on sir. the Google form, right? Yes, Yes, Please, sir. Google please Classroom start पे भी working है on sir. it, right? Please start working on it so that we can discuss these concepts in the. This is a point for discussion. Hope you can. Are you able to access it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you Ji, sir. you are not able to access it. Yes, sir. We are able to. Okay. Okay. So this is a very short discussion points, right? We can do both the things together. It's a kind of a Sir, yes.
This Google form is given in assignment, no? Yes, you can say it in assignment. सर Yeah, but सुबह ही it मेल पे is आया था shared सर, हम लोगों ने तो previously. भर दिया। Yesterday is shared, no, sir? Yes, pardon. सर ये कल ही शेयर किया गया था असाइनमेंट का ना, वही तो सबमिट करना है। हाँ हाँ, ये आपको शेयर कर दिया गया था। हाँ जी सर। अच्छा, तो वो हमें भेज दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा मजहर साहब को। हेलो, जैसे सर ना वो उसमें जो है अपना ईमेल आईडी पे ही जो है भरना है, तो ईमेल आईडी से सबमिट हो जाएगा सर। जैसे ही हाँ सबमिट हाँ, करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। ईमेल आईडी से सबमिट हो जाएगा। राइट राइट राइट, ओके जी सर, थैंक यू। So let's, if you have submitted, then it's fine, right? थैंक सर यू हम सर, लोग भर थैंक यू चुके वेरी हैं मच। सर सुबह में अच्छा ही। अच्छा, the same form, the same form on interpersonal communication. अभी Yes, सर हम sir. तो नहीं भरे सर, भरे सर नहीं इसको थे, सोचे सबमिट थे कर आप देना, क्लास लेंगे उसके बाद ओके। भर देंगे। Acha, okay, please do fill in, okay, and send it to Madhar Sahib. It's on the email, right? Yes, that ओके is. सर, So थैंक यू, you know थैंक यू सर। what my concern was, that you know what are the discussion points right now by way of filling that form, right? Now see, we are coming to the very intricate part. As I gave you the background to it, that how interpersonal communication takes not a back seat, but a very frontline position in our day-to-day life. This is what we are saying to say. But there are challenges. I'm coming to those challenges, then we'll come to those strategies, right? So when this kind of situation happened, when Sir, sorry to interrupt. Yes, Sir, yes. the first point is name and affiliation. So, what is to be filled in affiliation? affiliation, your college, your university, where you belong to, your designation, and all Okay. that. That's the one. Okay. 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 Thank you. Now you can do both the things together. It's not much different. You can listen to me and you can also fill if you like. Right. Now let's come to this point. I'm coming to a very crucial point. As I gave you a background to IPC, that is interpersonal communication, right? There are certain interesting points coming up, and those challenges are very crucial. You see, we can know what to do at our workplace. We do things. We make presentations. We conduct meetings, as you must have seen in that form, right? We do various activities for the department, for the college, for the university, right? You are assigned different activities. You have to work with your colleagues, work with the administrations, right? And you work for the department. This is a very commonplace kind of thing. But there is one thing that is missing, and you must have found that, where I would like your attention to be drawn, is that because of technology, I don't know, because of technology only, or because of the social nature of our life that has gone over a big change, our conversation is going to become a dying phenomena. And if you look at the data, we have become self-obsessed with ourselves, our own life. And technology has aided that. We are plugged in our own world by way of doing SMS, writing on WhatsApp, right? And the conversation has died. We meet our friends by choices, not by spontaneity. And therefore, you will find that this is because we have become glued to our phones. And sometimes people say, make it quick. What do you have to say? See that line. And you are nonplussed.
that you are going to meet your boss or superiors or someone is in a hurry, right? And you're saying, and he says or she says, please make it quick. What do you have to say? And probably the conversation has died out. You have passed on the message. Or please see my Facebook status and then you can respond to me. See what I have written in the Facebook and then you can talk to me. These kind of discussions are on. Now, we are gradually losing our ability to listen and talk to people and to understand their point of view. This is where I would like to draw your attention to, that this interpersonal communication, nature of communication, which is very important, is being gradually affected. Because what is interpersonal communication? You get things done. But this is not simple definition of interpersonal communication. To get things done, it has got an angle of sensitivity to understand the needs of what kind of conversation we are in. So a workplace situation is like that. You have to organize a meeting, and if you have good interpersonal communication skills, the meeting becomes very smoother. It becomes very clean, and it becomes very inclusive and very holistic. But if we try to see that, well, meeting becomes only your point to make, it becomes only a purpose where you are going to make only your point, meeting does not last for long. So presentations also have this kind of nature, that you have presented very well, you have prepared all your proposals very nicely, right? Nobody responded. Everybody says that, okay, let the turn be over. If there is a question, then I will send a question. But look at the angle of IPC, the same proposal, presentations, the same meeting, the same talk, official talk, will have another angle, and it used to have. So when we say conversation is not only about winning your point. Meeting is not only about winning your point and letting your arguments prevail over. It has an angle. This is being affected because of the technology factor, right? Not because of only, because of the social factors also. Sherry Turkle, who is a professor of the social studies of science and technology at MIT, wrote in her latest book, that is Alone Together, that one of the main reasons people don't converse anymore is that a conversation takes place in real time and you can't control what you are going to say. We get to edit, and that means we get to delete, and that means we get to retouch the face, the voice, the flesh, the body. Texting is preferred to talking. Now see, the social nature of our communication, the social change, that we communicate because we edit well, we communicate because we delete sometimes, right? And we communicate things on Facebook, on WhatsApp, and texting is preferred to talking. And then you see, when you have this kind of version, that the scope of conversation dies, because you are not including somebody else's thoughts and feelings. And just imagine if any official meeting has taken this shape, the nature of the meeting and the outcome and the scope of the meeting changes. So what do
little room is left for clinical kind of communication. And you are always uh, busy with saying that my job is over, I have got my work done, or the administration is busy with this kind of thing. So the dialogue that is meant to include all these features uh, is something missing. And British Nandi, who was a very famous journalist, he says the word conversation will soon disappear from the text. New means of engagement are taking over and redefining our lives. Whereas our hearts are desperately trying to reach out, but our minds are holding us back. We are hiding our true feelings under the mask of technology. Now, this is where my point was that this is a challenge, and this is the IPC challenge. Look at the contrast position that is taken again by this article, which I was quoting Pritish Nandi's quote that was published sometime in 2013 in Sunday Times of India, and the title was "Is Conversation a Dying Art?" Now, I'll give you another contrast version to this article that was in editorial. It came in Times of India by Arnab Ray. And he says, I prefer instant messaging. IMING, instant messaging. There's an icon that is being used like this. I am, and then you have ING. Instant messaging. Now, see, here he says that instant messaging is how conversation should be conducted. For in this day, or in this age of serial multitasking and decreasing attention span, it is just not possible to give anything or anyone exclusive access to your mind space. So with the latest outrage on Twitter, mindlessly scrolling through your Facebook feed and obsessively checking your email, instant messaging is just much more in time with the time sliced times we live in. So we live in time sliced times. That is what his version is. Time sliced times. Our times are measured like coffee spoons, as if he is wanting to say something like that. So he is using the phrase time sliced times. Arnab Ray. And he is talking in somewhere this appear in 2019. This article. The one that I quoted before was in 2013. And I'm giving you a span time where how changes have been made and how forcefully he is making his point in editorial columns. And the title of the column was "Don't Talk Message." And there is a sub-headline where it says, it is just so much more in tune with the time-sliced era we live in. So people have developed, as he says, people on IM have developed the social protocol. And then what will you do with the conversation? Finally, in the last line of the article says like that if we are sitting across the table, I would talk about weather. So what is left in conversation now? Now see the version. In Mukherjee's article that was published in 2013, where Pritish Nandi is being quoted, right? The title was "Is Conversation a Dying Art?" And there the caption read it like that texting is communication. Fine. But the legitimacy that
texting acquired, then it is being understood. And the impersonal virtual space is best to argue and engage. If we don't like someone's views, we tune off. But talking or listening is simply an option anymore, is not an option anymore. So this is where the role of interpersonal communication comes in. You can use, you saw the two contrasting views, you saw the different views of different spans of time. From 2013 to 2019, 6 years of time, right? There is a change coming over. And when Arnab raised in editorial, I don't see it as a final word, but I see how the voice of an person of an eminent journalist like him is writing in the editorial columns of Times of India. So this is one aspect, that how things have changed, right? And you see, that's why it has become very difficult. Now let's come to this again, IPC aspect, that sometimes you have to manage difficult conversations because of this only. Because you see, sometimes it happens that there's another article that I would like to quote, Managing Difficult Conversations. And this was published somewhere in 2007. There he is quoting one situation that some person like Siddharth Bhattacharya, who was a president of Dale Carnegie Training, he says that difficult situations sometimes arise where a team member is kept out of the loop and decisions are taken behind his back. It happens. Sometimes it happens in our situation also. I hope you will agree, right? Yes, sir. Yes. And for example, he is quoting that Vandana, it is an article by Vandana Ramani. So Vandana quote, for example, if a person has been given the responsibility of arranging a venue in Delhi and eventually someone in Mumbai gets to do it, egos get trampled on. So a simple SMS informing the other party that such a decision is being taken would have helped mend the matters. So this is interpersonal communication. This is the point. So, and difficult situations arise. She says that you have to anticipate a difficult situation to de-escalate the tension, the stress, where you can de-escalate the conflicts at the workplace. So this lack of empathy or lack of compassion in a conversation is driving us back to technology, making us a bit more safe, but that is not safer. So this is where the idea is important, that sometimes we miss the thread of conversation. Sometimes we miss so many things that a conversation can allow us to interact more and to make us more lively. And we can bring up a lot of things as problem, that we don't have time. We live in a time-sliced world. Our times are measured, But, William Foley, who is a linguist professor in the University of Sydney, William Foley, he says that mastering the art of small talk, he's referring to the idea of small talk, make you feel comfortable in any social situation. From lunch with the boss to a cocktail party where you are a complete stranger. Small talk functions as a low-threat way to make connections with people. So, the idea of IPC is also linked with small talk. The idea of, as we saw in the just a few minutes back, that the idea of IPC is linked with compassion, with empathy, with telepathy, right? Or anticipating difficulties in situations. It is also linked with small talk capabilities, small talk abilities to communicate.
And because it is just small in nature. What is the nature of small talk? A little chat that you thought was a waste of time can get your life in a new direction. That is the idea, right? Small talk. And small talk has the unimaginable power to expand your social circle, and it can initiate and revive your relationships with your colleagues, with your superiors, and all that. So, the idea of a small talk is that people who are good at small talk have good interpersonal communication skills. This is the idea. And obviously, we'll discuss in this following section what are the strategies, but then this is what is happening. There is another very critical point for discussion that we often have. Sometimes we can't say, no. Sometimes we can't say sorry to someone, right? And if we say with lot of conditions. And if we can't say no, the moment we say yes, we are not doing the entire thing that we want to do. So what happens that that if you have to say someone to I don't know, most people consider it shameful to not buying the right answer to everything. And this is again linked with the interpersonal communication phenomena. As I told you, that connects the work and the situations, your performance in the work situations. And most of the time we avoid giving an answer like I don't know, and we keep quiet. Now, sociologist Nandini Sardesai, she says that we are taught from an early age that intelligence is equivalent to knowing all the right answers. Again, I'll repeat. Nandini says, she is a sociologist, Nandini Sardesai, that we are taught from an early age that intelligence is equivalent to knowing all the right answers, but it isn't. Children are publicly shamed in classrooms. Juniors are decided by their bosses at work for not having the right answers to prove they are intelligent. Moreover, parents pressurize their children to perform well in exams. And so on. These are the things. Even clinical psychologist Dr. Seema Hingorani, she says, over the years, what has happened with the kids? Kids assume that their parents are highly intelligent people who have an answer to everything. They absorb the message that people with power are those who know, those who say I know to everything. And when they grow up, they all want to appear intelligent in the same way. So, this is where the mystery of, or the science of saying I don't know becomes very obvious. And sociologist Shiv Vishwanathan, he says that the actual exciting part of the human being is dealing with the mysteries of the world. If we always attempt to gain control of our environment and life, we'll be very unhappy. A lot becomes possible when we embrace, we even celebrate the fact that no one can know everything. So the three potential words, I don't know, can liberate, can empower, and can increase the potential for true communication. So the value of true communication lies if we can say very honestly that I don't know. That is the idea.
But this is not being done. We always fake ourselves to be in such a situation that we want to believe, make others believe that we're okay. I don't have time to answer, but I can answer. So that is where my point is that IPC, interpersonal communication, has so many different angles. And these, I don't know. I'm giving one or small talk or managing difficult conversations. They are always interpersed with our work situations. Because we have finished our proposal presentation, fine, I'll take my bags and I'll leave the venue. And so many queries come up. Because it was an official position for me to present the proposal, and I attended a few queries which was needed there. Yet there are other things that are missing to that angle, has been left out. So this, the value of true communication lies not simply seeing the old traditional network of communication angle. There is a sender, there is a receiver, and so people are speaking and then people are answering questions. No. Times have changed. Our social protocols have changed. हेलो Yes, please. Yes, Mr. Amit Kumar. या थोड़ी देर बाद Yes. आ गए हैं Hello. So this is where the concern is, and that's in the same league, in the same vein. एक्सक्यूज मी सर, Yes, yes, गूगल please. फॉर्म अभी सबमिट कर देंगे क्या? कर दीजिए, कोई बात नहीं है. जब आपके जब कन्वीनियंस के बाद ही कर दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद. ओके सर. Whatever is convenient to you. Sir, I है ना? open mobile and laptop both, so parallelly work. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. We all work parallel. आप Okay, और भी sir. काम कर रहे होंगे घर में, बहुत सारा काम कर रहे मैं होंगे. सिर्फ बस Right. दो काम कर रहे हैं. कोई बात लैपटॉप खोले नहीं. That's not a problem. That's not a. इसी पर तो हम लोग टॉक कर रहे हैं. Sir, Right. I have filled it. Yes, yes. I have filled it Okay. in the Okay. morning. Listen, that's the email is there. Sir, Your email is, Sir, handed in. It's okay. वो उसमें email mention करिए. That will take your email from email. It will go to. You can speak to Mr. Mazhar, right? He will help you if there is a. Okay. सर यहाँ भरा हुआ नाम एफिलिएशन ऑलरेडी अमित कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस. Yes, वो J क्या? एग्जांपल है क्या सर? J. अमित नहीं, कुमार name, असिस्टेंट प्रोफेसर. आप अपना नाम लिख दीजिएगा और एफिलिएशन लिख दीजिए बस कि कहाँ से आप हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, उसके वही. नीचे लिख देंगे. ओके जी जी, ऊपर में लिखा हुआ एफिलिएशन वहां पे लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख दीजिए. ठीक है, जहां पर आपको लगे सुटेबल, ओके सर. जहां पर आपको ये लगे. कोई ऐसा थोड़ी उसमें कुछ बात नहीं. ऑलरेडी सर लिखा हुआ अमित कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस दीनदयाल उपाध्याय है. उसके नीचे लिखा है कि योर आंसर, तो उसके नीचे ब्लैंक वहां लिख दे. मैं फिल कर रहा हूँ मेरा जे मेरा आंसर वो मेरा दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट की दिल्ली का हिस्सेदार है, वो मैं फिल कर रहा हूँ अपना. पार्डन? वो सर मैं फिल कर रहा हूँ, वो भरा नहीं गया है पहले से, वो मैं फिल कर रहा था क्वेश्चन अपना जो असाइनमेंट का. आपको उसको फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए. हेलो. प्रॉब्लम है. अच्छा, हम लोग सबकी मेल पे गया हुआ है. अच्छा, ओके. सो इट विल बी डन, आई थिंक सो. हो Yes, जाएगा. sir. हो गया, Yes, sir. sir. Yes, sir. It's Okay, thank you. So what I was trying to tell you all about, that things that are very in our reach, things that are in our reach, in our space and time. We have decided that we have made a very time sliced situations, right? And we are part of that. We become witness to that kind of situations every time, in our workplace, in our classroom presentations, right? And at our home also. So there is another angle to it, that the one that I will come to the gender part later. You see, the associations of saying, giving an apology.
It's again a matter of interpersonal communication. We rarely do that. If you have made a mistake, you are overstating your facts. That is something that is destroying your communication skills. You say that, okay, I did this thing, but I'm sorry, and so don't say that. If you are sorry, you are just sorry. And if you are giving a lot of explanations, you are killing the spirit of communication there. So that is not conversation there. Again, a contrast situation. इसके लॉजिक को हम वहां नहीं ले जा सकते उस पर्टिकुलर जॉनरा में, सॉरी के जॉनरा में. So you must have seen people saying too much when they have to express apology. Saying too much becomes, you are killing the spirit of apology. And you are giving over explanation. That is also killing the spirit of apology. So just I picked up 4 or 5 examples, right? How IPC is in our reach. And we don't have to do any effort for that, right? So imagine, what happened, that US Olympian Ryan, he was invited to a party at his friend's place. He vandalized their home. He had drunk too much. And you see, the next morning he's giving explanations that I'm sorry and this happened because of that and that and that. That is not an apology. So this is where the point is that a bad apology is worse than no apology. So why I'm using this apology angle, that because of insincere apology, you see, what happens, it becomes more counterproductive. So there the art of conversation is different, where there the spirit of conversation is different. Whereas somewhere you can text also and you can speak also, people do it. देखिए आप कैसे करते हैं इंटरपर्सनल, कहाँ आप कहाँ यूज करते हैं, आपने देखा होगा. When you have applied for a project or a proposal and you are sure that you have all the necessary qualifications and expertise to get that project, you send that document to a person like any institution director or whatever you want to say. So you doubly ensure that your letter has reached. You have sent an email also, you send a SMS also, and you connect yourself with all the persons involved in that. So you are not making only communication on paper only, you are ensuring that that paper has been received at the right point and it has been taken care of. तो वहां पर तो आप करते हैं वो सारी चीजें. आप क्या क्या करते हैं? You write also, you speak also, you use SMS also, you use WhatsApp also, you call them. So many communication takes place at the same point of time, because you think that it's a work-related kind of thing. And that is the big picture of communication. It happens in organizations also, is like that. Good organizations, when they get back to you with the details, they will ensure that you have received the call for interview, you have received a proper email, you have received the letter, and you are traveling in that day, your arrangements will be made in that particular organizations. They ensure everything. So it happens at the big picture level of, it's not that it's not happening. अगर आप देखिए आप खुद करते हैं, और and if you apply to any organization anywhere, good organization like in India also, they ensure that you got the right message, you got the right message for interview, you got the right message for any kind of thing that you have been asked to do, or you are an evaluator, or you are an examiner, you are an expert for thing. So they ensure at every level that you are placed comfortably in that situation. And they're using all kind of interpersonal communication skills. Because that is a high stakeholders work
That's why you are doing it. But we miss those things in our daily life. If somebody makes a mistake, they will come and meet you and will make you lot of requests. Please forgive us. We missed the car that was meant for you. We missed the communication that was meant for you. We could have sent the vehicle at the station, at the airport. So many things come up. And that is happening in our day-to-day life. It's not that apology, sorry, right? They can't say, I don't know then, right? They'll come straight to the point. So this is where IPC already works here in our day-to-day lives. Where it doesn't work, I was referring to that particular zone or that area, right? So this is where I want, and you see, just that you say that, okay, well, I can give any excuse. You don't give excuse. You are sincere also sometimes. When you are asked by an organization to do work, suppose you are going to evaluate someone's project and ICCR or UGC has invited you as an expert. Many of you come from as an expert. So look at the level of sincerity you display. You see the forms very carefully. You see the proposals very carefully. You ask about that proposals. Is the candidate there or not? Is he applying and having a fulfill all the qualifications or not? And then you also ensure that injustice should not be done to the candidate. You take all care and measure. Suppose you are an examiner for any other high-stake examiner. How do you behave there? You behave in the utmost sincerity. Because the organization, you know, they expect from you all that. So there the interpersonal skills are much more activated than our normal workplace situations. But this is our normal life. You know, you have to live with your colleagues every time. The same colleague, you have to see your colleague every day. And we have our own kind of an attitude. So an attitude factor is also one of the most important factor that is coming up in the interpersonal communication skills, attitude training. And perhaps no organization can spend, they can spend you how to train the students, how to train the workers. But what about attitude? They cannot cultivate that. That is an inborn thing that you have to pick up unstatedly. So there is this possibility is there, right? And I'll share you a very simple screen, right? Where you can see now the next part is all about strategies of communication, right? How you will ask me that, having done all said that, what are the different strategies? So please let me know if you have problem in not in the screen, right? I'm just sharing it with you. I'm not able to. I'm not able to window. Okay. Can you help me how to share the screen? Anyone can help me? In menu panel, upward arrow is. Yes, I have clicked that upward arrow. Present Right. now. You should click on present now. But it is sharing. It is showing me share and cancel, but it's not able to. And go to the window. Window. Okay. Then after window. You want to share your PPT or Yes. I want to share my PPT. Double click on. Then first open to the PPT, then go to this option. No. After window, I clicked the window part, but there is a icon here of sharing. Sir, go to your folder where the PPT is. Sir, from present screen, yeah, you can go to the entire screen. Acha, okay. Let me. Can you see now? Present. Can you see the screen now? No. No, sir. No, sir. No, sir. First entire screen, then click on the main screen, sir. That is showing in the Entire option, screen. in the box. But I'm Entire not able to click the share part because that is not taking the click.
Yes, sir. You have to click on the sample scene that is showing in the box. Pardon? Yes. That is showing in the box. You have to click on the sample screen that is showing in the box. A small screen is visible in Okay. the box. Okay. Click on it, then please Yeah. click on the share. Yes. Okay. Fine. Thank you so much. Okay. Sir, show. Show the Yes. screen, sir. Can you see it Yes, now? sir, it is Yes, visual. Yes, sir. yes, Okay. see. Thank you so much. Thank you so much. Now let's come to this strategy part, right? I can you see it now? Yes, Slide sir. one. Slide Yes, one. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir. Yes. Thank you so much. Now these are all strategies, right? In slide one, we were talking about how to talk better, right? Better. So you have these strategies, and Yes, sir. some of the strategies are: you listen more than you talk. You know that. When in a group, don't talk to just one person. Wait for your turn and think before you speak, but not to the extent that you decide to keep your own opinions to yourself because you think you know the best. Staring at your cell phone, you see, it's a spelling. Please excuse me for wrong spelling. Staring at your cell phone while taking kills any scope of half decent conversation. So this is the point I was making. And understanding the silence. They are just as important to develop conversation skills. So silence helps you gather your thoughts and think and reflect better on any subject. Right? Should I move on to the next slide? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And how to say Yes, sir. ways of saying no. I don't know. I was talking about that. And I want to be sure, but before I give you the correct information, let me call you back. So these are the ways of saying no. I don't think I am the best person to answer that, but I'll find out. That's a good question. I'll see what I can find out for you. These are all markers of saying no. I don't know. No. Yes, sir. I don't remember off the top of my head. May I check my notes and get back to you? So this is not my area of expertise, but I can find out for you. So these are all ways to say I don't know, right? Interpersonal communication skills. Now, another point is non-verbal clues you know very well. And observing the eyes, eye contact, body postures. So when you are listening to a person, do not cross your arm because that brings a physical and mental barrier, thereby obstructing free flow of conversation. When talking, don't try to touch your face or any part of our face because then the message you're trying to convey may not be taken as genuine. So these are all, tips how to maintain a consistent eye contact, body language, gestures, signals, so that you are read correctly. Next is cultural talk. You see, this is another good example. Americans have a reputation of being good small talkers, although the content may be superficial. The British are programmed to go slow by starting with eye contact and then commenting on the weather. The French talk about their health. Chinese and Russians discuss finances while Germans come straight to the point. Indians are by and large introverts. They do not approach a stranger because they do not know how to proceed after hello. Language often acts as a barrier. So this is where small talk becomes so crucial. And then the how to initiate a talk, keeping the right distance or giving a friendly vibe, saying good to see you. And we always do that. It's not that we don't do. Then starting a light and casual conversation, avoiding obscure subjects and emotionally charged issues. Discuss things of general interest. And avoid cribbing. Why is life treating me like this? That would be like trying to sprint before warming up.
So small talk helps to get a glimpse into the person before indulging in a deeper conversation. And avoid using phone before others. That could be very annoying for the person who wants to talk to you. People don't take things seriously and they won't take you seriously then. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And this is Yes, a sir. finding Yes, sir. It's looking. common ground of communication. Do not overshare when revealing something about yourself. Make sure that you don't say too much. There are chances you may never meet the person again. So moreover, oversharing can make you seem like a self-obsessed bore. End it well. Say something like that, it was great talking to you. And we do say in our own language. So that's why these are things very important. Then I was talking about apology. Apology should not include the word but. I'm sorry, but you started this. But you do this all the time. I never complain. So avoid an apology saying with conditional. Apology should be said without any conditional. And look at the language. If my words pain you, then I am sorry that you are hurt. That implies that you are not giving any apology. That is a bad apology. So this is where, and after you have apologized, don't bring the subject again and again. That will cause all kind of pain to the other person. Don't use the apology to make the person feel small either in private or in public. Turn the page, close the chapter and move on. These are all features of interpersonal communication. And you know, their sorry becomes the very hardest word, how not to apologize. Don't shift the blame to the person. Don't say it's not me, it's the alcohol that has vandalized the house. And don't say like this also. You have to forgive me, must, you must. No, I don't have to, I won't. I'm sorry, but it wouldn't have happened. Don't say, use this thing. So don't play the sympathy card. And don't give sorry on emails, on chats. Saying, I'm sorry I hurt your feelings. It isn't enough. So these are all the tips to make a good interpersonal communication skills. So let us see one more aspect which we have in it. How men behave in an interpersonal fashion and how women behave. Men interrupt or speak over others to assert themselves, their role. Men establish less eye contact, fewer facial expressions. They rely more on body positions. They use more gestures. Men touch others more, value touch less, and are touched less by others. Men use more non-verbal cues of power or status to indicate a degree of influence or control. Men are better at map reading. And this is the version. Women wait their turn to speak so talk can be shared among equals. Women ask questions to invite others into the conversation and show interest in others' ideas. They establish more eye contact. They use more facial expressions, gestures, and they rely more on close body positions. Women touch others less, value touch more, and are touched by more by others. Are sensitive to expressions. They're quicker to note even the twitch of an eyebrow. So these are all features that yes. Yes. So these are all the positions that we have taken. How interpersonal communication moves around into the different spheres of life or communication angles, right? So now it's open for interaction. Um, is there any point where we can interact? It would be always good. Yes. Sir, my question is there.
सर कि जैसे कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, Where are जैसे you आप। from? Amreen Fatima, where are you from? यस सर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कन्नौज। Acha, you are from Kannauj. Okay, government degree college. Yes. Yes, please. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम तब आती है ज्यादा, जैसे कि कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग टाइप होते हैं, मतलब जैसे आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं पर वो आपकी सुनते नहीं है। आपको बात करने नहीं देते, है ना? हाँ यस सर, यस सर, सो हाउ टू हैंडल देम? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी का तो पूरा वो स्लाइड्स था। सर बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, हाँ, ये मैं करते उनकी हैं, बात ये करूंगी, तो वो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे ज्यादा पता है, आपको कुछ नहीं पता है। दे नेवर वांट टू लिसन यू एट ऑल। उनको भी ट्रेनिंग चाहिए ना, आईपीसी ट्रेनिंग चाहिए। तो ये एक ऐसा एरिया है, दिस इज द एरिया वेयर दे आल्सो नीड ट्रेनिंग, यू नो। सर, और सबसे बड़ी समस्या है उनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। नहीं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, वो खुद जाके ट्रेनर को ट्रेन कर देते हैं। सर बट सम कुछ तो होगा कि उन्हें कैसे, हम उनको अपनी बातें कैसे उनसे कहें? देखिए, एक तो नॉर्मल जो हम लोग के पास टूल रहता है वो है लिखने का। लिखने के टूल में क्या होता है, वो लोग वही लाइन पढ़ेंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बाकी लाइन को इग्नोर कर देंगे। और हम जो इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे थे, उसमें यही डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दैट कि हम जो कि पूरा कम्युनिकेशन पढ़ते नहीं है, हम बात सुनते नहीं है किसी की, तो हमारा आधा से ज्यादा पॉइंट जो है रह जाता है और दूसरे को एक कम्युनिकेशन गैप के फीलिंग देता है। और जब कम्युनिकेशन गैप होता है ना, तो आप अपने आप विड्रॉ कर लेते हैं कि अब मेरी बात तो दूसरा आदमी सुन नहीं रहा है, सुनिए, अब मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है, तो इसलिए आप चुपचाप ही बैठ जाओ, भाई इनको बोलने दो, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये रजिस्ट्रार हैं, ये कंट्रोलर हैं, ये तो सुनेंगे है नहीं, एंड दे विल टेक इट एज एन ऑफेंस, राइट? समटाइम्स इट हैपेंस आल्सो लाइक दैट। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी ये भी वो हमसे ये कहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है और आप ऐसे ही चले आते लेके। हाँ, So, ये भी this कहते used to हैं। be very awkward. हाँ, ये चूंकि आपको ज्यादा पता होता है, तो आपको ये बात कही जाती है, राइट? Yes, sir. आप ये ऐसे देखिए ना उसको, कि आप जब उनके पास जाते हैं तो आप काफी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, राइट? तो वो तो ये कम्युनिकेशन एंगल है जो कि दे मिस इट, एंड समटाइम्स क्या 95% ऑफ द टाइम जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में, ऑफिसेज में ये कम्युनिकेशन की दिक्कत है, राइट? म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेज में दिक्कत है, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेज में जो कि डे टू डे वास्ता पड़ता रहता है हम लोग का, राइट? ओके, उसमें भी ये दिक्कत है। ये दैट इज अ वेरी they want to have a very localized kind of communication, हम उसको वर्ड यूज करते हैं। इसको जैसे होता है ना कि आपको चोट पूरे बॉडी में लगी और सिर्फ इंजेक्शन सिर्फ एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया रहा है, अच्छा यहाँ ज्यादा दर्द है तो हम इसके लिए इंजेक्शन दे देते हैं। सर लेकिन इसे डील कैसे करें? हाउ टू डील विद देम? इसका क्वेश्चन था मेरा, मैं जी बोलिए। हाँ, डील कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। यस, this is the biggest challenge that we are facing. Yes, Dr. Singh. सर मैं डॉक्टर नाहर सिंह। हाँ सर मैं डॉक्टर नाहर सिंह, दयालबाग यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर। सर एक क्वेश्चन था, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, जो हायर अथॉरिटी होती है, तो उनके लिए क्या किया जाए जिनको ईगो हर्ट ना हो? देखिए, और अपनी बात को भी कह लें। ईगो तो सॉरी कहने में भी हर्ट हो जाता है बहुत। आपको किसी से चल रहा है आपका कंफ्लिक्ट, ठीक है, और उसको जाके सॉरी बोलना है, अब आप सोचिए, राइट? तो सारा ईगो पे लेके आप जाते हैं, राइट? फिर भी आपको बोलना पड़ता है, बिकॉज योर प्रिंसिपल वांट्स यू टू से सॉरी टू रिजॉल्व द मैटर, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन कहीं कहीं बहुत जेन्युइन कम्युनिकेशन तो लोग कह देते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये सेंसिटिविटी रहती है, बिकॉज वी आर लूजिंग। हम तो इसलिए सॉरी से बुलवा रहे हैं कि प्रिंसिपल के सामने अगर सॉरी बुलवा देंगे तो 4 कलीग में जाके कहेंगे कि आज उसको सॉरी बुलवा दिया। Are you getting my point? Right? Right? इसलिए सॉरी बुलवा रहे हैं। ये जो पीछे जो उसके पीछे माइंडसेट है, वो ये माइंडसेट है। अगर उसी सॉरी को अगर हम प्राइवेट में करते, कहीं और करते, तो वो सॉरी का इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करके सॉरी कहिए। तो these are all challenges। ये चूंकि
हेलो सर। Yes, yes, please, please. हेलो सर, आई डॉक्टर हेलो प्रोफेसर हाँ, उत्कल यूनिवर्सिटी। अच्छा उत्कल यूनिवर्सिटी से, अच्छा, ओके ओके, यस यस सर, ये सर इन भुवनेश्वर। यस यस। सर एक्चुअली मैं नई ज्वाइन की हूँ डिपार्टमेंट में, तो मेरे एग्जांपल देखिए बताती हूँ कि सर ऑलरेडी जिस डिपार्टमेंट में ग्रुपिज्म चल रहा है, तो एज ए फीमेल फैकल्टी तो क्या मेरा मेरा क्या रोल होगा, मैं कहाँ जाऊँ? ये तो और बहुत मैं ये सिंगल फैकल्टी फीमेल फैकल्टी हूँ। सीनियर फैकल्टी भी हैं आप? नहीं, सिंगल सिंगल फीमेल फैकल्टी, अच्छा, बाकी सब सिंगल है तो फीमेल। और अरे बड़े चैलेंजिंग पोजीशन पर हैं आप तो, राइट। हाँ, और उसमें ये आई कैन अंडरस्टैंड योर एनिग्मा, राइट, व्हाट हैपेंस, हाउ टू डील पीपल अराउंड यू, राइट, एंड ऐसा सिचुएशन आ जाता है और उसमें आई मीन इट्स टू यानी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि हम इसको डील कैसे। हम तो एक जनरल एकेडमिक टिप्स की बात कर रहे थे, लेकिन उस सिचुएशन में ये तो आपका जो उस टाइम जो उस मोमेंट का विजडम ये काम करता बताइए है। कि मेरे चुप रहना बेहतर है कि क्या मैं क्या स्टैंड क्या लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, चुप रहने की बात नहीं। आपके चुप रहने से कोई आपको एडवांटेज थोड़ी मिल रहा है, या आपको ज्यादा बोलने से एडवांटेज थोड़ी मिल रहा है। आपको तो एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट चीजें बोलनी है, वो पॉइंट हो रही है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फीचर। ये आपके चुप रहने से कुछ थोड़ी आपको एडवांटेज मिल रहा है, कोई आपको थोड़ी नोबेल प्राइज भी दिया जाएगा कि बहुत चुप रहती हैं, राइट, ऐसा नहीं है, ओके। या आपके ज्यादा बोलने से आपको कोई थोड़ी नोटिस कर लेंगे, वो भी नहीं करेंगे। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव और टू एक चीज सेलेक्ट बताती दैट। हूँ सर, जी, जब मैंने ज्वाइन किया था हेडशिप दूसरा था, अब मेरा 1 साल होने वाला हो गया है, अभी हेडशिप चेंज हो गया, टोटल एनवायरनमेंट इज चेंज। हाँ, वो मतलब होता है, वो होता है, लॉबी होती है, एक लॉबी के दूसरे हेड होते हैं, दूसरे लॉबी के दूसरे हेड होते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, राइट। सर एक्चुअली आई स्पेंड माय 12 इयर्स इन एमयू, एक्चुअली सर मैं एमयू की ही हूँ। अच्छा, सो एमयू ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, यस ओके सर। ओके ओके हाँ, ओके तो सर ओके। वहाँ पे इतना हमने ये सब नहीं देखा था जो यहाँ पे आके मुझे देखना पड़ रहा है। सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा हुआ जहां नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूं, वहाँ पे सर, यहाँ पे सर ओपन हो रहा है, ओपन ओपन हो रहा है, उसका भी एक कम्युनिकेशन एंगल है, और उसमें भी आपको वही करना पड़ेगा जैसे वहां के लॉजिक परमिट करती है। आपको अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। यू हैव टू सेलेक्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम कह रहे हैं। आइदर इट कुड बी रिटन कम्युनिकेशन, इट कुड बी स्पोकन कम्युनिकेशन, इट कुड बी SMS, इट कुड बी व्हाट्सएप। कहीं ना कहीं तो आप कम्युनिकेट करके अपनी बात पोजीशन को बताएंगे कि ये मेरा कंसर्न है, एटलीस्ट योर कंसर्न शुड बी हर्ड, ये पॉइंट हम कह रहे हैं, राइट। आपके चुप रहने से या आपके ज्यादा बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, लेकिन यू हैव टू लुक एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ यस यस यस। Sir, I have a question. मैं कहूँगा Sir, I have a कि question, सबसे sir. पहले आप यह मानिए, डॉक्टर, सबसे पहले आप यह मानिए कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, हाँ, और उसमें घबराने की जरूरत नहीं, अंदर से मजबूत रहिए, और यस और जो नियम डॉक्टर के सिंह, दायरे में है उसका प्रयोग करिए। डॉक्टर निर्भय सिंह कहाँ से हैं आप? हेलो जी सर, मैं आपको VVPG कॉलेज शामली से हूँ। अच्छा, और अच्छा। मैं सर मैं तो आपको यहाँ से मेरा गांव तो उधर बिहार में है, लेकिन इधर बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1400 किलोमीटर आके अपने रंगदारी दिखाता है, तो हम कहें कि देखो सही आदमी चाहे 1400 किलोमीटर दूर से आए चाहे 1500 किलोमीटर दूर से आए, जी 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 हैं, जी, और जो गलत रहेगा कुर्सी पे बैठ के भी उसका पैर कांपेगा, और जो सही रहेगा वो 1400 किलोमीटर दूर से भी आके सीना तान के रहेगा। जी 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 जी। लेकिन तो लेकिन फिर प्रॉपर ये चीजें कम्युनिकेशन होती अगर हम लोग कर लेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, वही मैं डॉक्टर रोमाना को भी कह रहा था कि प्रॉपर कम्युनिकेशन एट द राइट टाइम कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा सिचुएशंस जो है हैंडल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को बात जानते हैं कि मेरे पास कम्युनिकेशन पहुंच चुका है, हम अभी इस मसले को नहीं बोल पाएंगे। यस, डॉक्टर मनोज कुमार, ये देखिए कि ये ये तो एक मान एक लीजिए हमारा संविधान है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, सब कुछ अपने अधिकार है, सबके कर्तव्य है। अंग्रेजों से हमने कैसे लड़ा, हमारे पास तो कोई अधिकार भी नहीं था, फिर भी हम लड़के जीते ना। यहाँ तो हमारे बहुत सारे अधिकार कर्तव्य सब लिखे पड़े हैं, उसका बस प्रयोग करने की जरूरत है। जी 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 जी, आई गॉट योर पॉइंट। जी डॉक्टर मनोज कुमार, आप कुछ कह रहे थे? जी जी बोलिए। सर
सर मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के एक अच्छा डोज दे दिया जाए तो ऐसे लोगों का ईगो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्या कहा? मैंने सुना, एक बार फिर से बोलिए। सर मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के एक अच्छा डोज अगर जो ऐसे प्रोफेसर को नहीं, दे देखिए दिया डोज, हम डोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, देखिए एक डोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट कम्युनिकेशन करने की बात कर रहे हैं, और राइट तरीके से, और वो असर लाता है, टाइम लेता है लेकिन असर लाता है। सर तब जैसे तो स्टाफ बहुत सारी एसोसिएशन है, डोज चाहिए होगी। सर डोज भी उचित माध्यम से ही दी जा सकती है। सर तब तो बहुत सारी डोज चाहिए होगी, कितनी डोज इकट्ठी करेंगे? लेकिन आपको नहीं मालूम कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं या जो लोग उस तरह के एक्टिविटीज करते हैं उनको कितनी तरह की डोजेस पड़ती रहती हैं। आप तो हर जगह मौजूद नहीं रहते हैं ना, तो ये आपको नहीं मालूम। तो ये भी तो आप समझिए बात को, उनका असर आने लगता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज दैट कि जो इस तरह के सिचुएशंस जब आती है, जब पावर अनइक्वल, जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेशन में कहते हैं पावर स्टेटस अनइक्वल कम्युनिकेशन और स्टेटस इक्वल कम्युनिकेशन। ये दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें अभी आपने इशारा किया, राइट। तो जहां स्टेटस इक्वल कम्युनिकेशन होता है वहां चीजें बहुत क्लियर रहती है, राइट। स्टेटस अनइक्वल कम्युनिकेशन में आधा इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, आधा उनके पास रहेगा, ऐसा भी रहता है। तो ये चीजें जब निकलने लगती है आपस में काफी डिस्कस करते हैं तो ये चीजें आने लगती हैं, उनके पास वो मालूम होने लगता है। और आधे से ज्यादा लोग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपके दूसरे कलीग के पास नहीं है कि आपका क्या इंटरेक्शन हो रहा है किसी अथॉरिटी से, उनको काफी पूरा पिक्चर नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन, वो एंगल को भी तो देखिए आप, राइट। तो ये जब एंगल जब खुलने लगता है तो लोग अपने आप को फिर रिफॉर्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते हैं। तो इट टेक्स टाइम बट इट डज मेक अ बिग डिफरेंस, and because of the power of communication only, it's because of the power of right communication at the right time only, जिसमें ये सारे फीचर्स इन्वॉल्व हैं। यस सर मैं लखनऊ की निवासी हूँ, लेकिन इस समय बिहार में पोस्टेड हूँ, राजेंद्र मिश्रा कॉलेज सर, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। अच्छा अच्छा सर तो यहाँ से उतनी दूर जाकर सरवाइव करना और सबसे बातचीत करना, व्यवहार करना, जो ये सब चीजें जो अभी यहाँ पे लोगों ने बताई, हमारे सहयोगियों ने, ऐसी समस्याएं वहां पर भी हैं, पर सर उसको तो हैंडल करना ही है। जो हमारा व्यवहार है उसको तो नहीं बदलना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सब चीजें तो सर रहेंगी। तो कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम अपनी बात को किस तरह से कह पाए जी। नहीं, किस तरह से कह पाए। और देखिए जो पुराना जो डेकोरम था कम्युनिकेशन का, वो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको हम नहीं सीख सकते हैं, वो आज भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो नई चीजें हैं, सेंसिटिविटी जो आ गई है, राइट, जो कम्युनिकेशन का जो नया एंगल आ गया, हम इसको एक वर्ड में आईपीसी को ऐसे दूसरे साफ लफ्जों में उसको ऐसे बयान करते हैं कि सेंसिटिविटी आ गई कम्युनिकेशन में, राइट। और जो भी आप उसका नाम दें, आईपीसी दें और ये नाम दें, जो भी टेक्निकल और एकेडमिक नाम देते हैं आप दे दें, राइट। तो वो सेंसिटिविटी अपने जगह पर है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है जी। सर प्रणाम। जी जी हेलो सर प्रणाम, मैं प्रभात सिंह, गोचर महाविद्यालय सहारनपुर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, जी जी बोलिए जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल में दो लोग होते हैं, तो जैसे आप किसी से जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरा वाला व्यक्ति ये सुनने को तैयार नहीं होता कि आप उस चीज को करने को सक्षम नहीं है, उसको ये होता है कि नहीं ये सक्षम। जैसे सर एग्जाम्पल ने, मान लीजिए कोई पैसा मांगता है आपसे और आप देने में सक्षम नहीं है उस समय, और आप उसको मना भी नहीं कर सकते कि जो है वो बुरा मान जाएगा। जी 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 जी। तो ऐसी स्थिति में सर मतलब क्या करना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल? ये आती रहती है, प्रॉब्लम तो आती रहती है, ये तो हम लोग के डे टू डे लाइफ में आती रहती है, राइट। और ऐसे सिचुएशन में तो देखिए ये तो आपको, ये तो मतलब कुछ नेचर ने हम लोग को ऐसा बनाया है कि हम लोग इस तरह के सिचुएशंस को डेली डील करते हैं। या बजाय उसको ज्यादा कन्विंस कीजिएगा कि मेरे पास नहीं है और उसको इरिटेशन होगा, आप कहीं ना कहीं आप उसको कन्विंस कीजिए यस यू आर इन ए पोजीशन टू हेल्प हिम आइदर दिस पॉइंट और दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कभी ना कभी तो ये होता है। तो ये तो है जिसको ला कर आप ये बना और एक्सप्लेन करेंगे, ओवर एक्सप्लेनेशन इज अ प्रॉब्लम। जी सर आपने दो वर्ड बोला था सर एक्चुअली, सर स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जी 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 सर अगर ये थोड़ा क्लियर हो जाता तो इजी हो जाता।
स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब जो हमने ये कहा था कि देखिए जो आईपीसी का जो मेन स्पिरिट था कम्युनिकेशन का, उसके फीचर्स जो सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, वो सेंसिटिविटी मिसिंग है आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में। वी कम्युनिकेट एंड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वी कम्युनिकेट, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और आधा से ज्यादा कम्युनिकेशन हमारा मिस हो जाता है। तो दैट इज डाइंग, दैट स्पिरिट इज डाइंग अगर ये मिस हो जाता है, वो कहने का मतलब है। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मैंने स्लाइड्स आपको दिखलाया, इसमें बहुत सारा टिप्स था, स्ट्रेटजीज फॉर कम्युनिकेशन, वो हो गया आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यस। myself Dr. Vijay from Tilka Manji, Bharpur University. अच्छा, कहाँ से, क्या नाम है? तिलका मांझी, भारपुर यूनिवर्सिटी, बिहार सर। अच्छा, विजय साहब। यस सर। जी 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 सर, माय प्रॉब्लम इज कितना भी सर इंटर कम्युनिकेशन स्किल कर लो, लेकिन मेरे जो वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, सुनते ही नहीं। हाँ, ये बात तो है सर, डीओपीटी का रूल है कि आपको आगे जाने से कोई वंचित नहीं कर सकता है जी। तो हमने बार बार एनओसी लिखते हैं यहाँ पे देने के लिए, एनओसी देते नहीं है। और लास्ट 18th को CUSB झारखंड, ये बिहार में गया में था इंटरव्यू, मेरी में मिस कर गया। जी जी। और भाई यहाँ 20,000 जैसे रुपया लगेगा, हाई कोर्ट में आपको पिटीशन डाल दीजिए, अपने आप दे देंगे, आपके चरणों में दे के जाएंगे एनओसी। नहीं तो वो तो लैप्स हो गया ना, इंटरव्यू तो हो गया 18 तारीख को। जी जी। ये है कम्युनिकेशन। देखिए, हमने भी बिहार के कॉलेज में काम किया है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का सिचुएशन मैंने भी बहुत फेस किया है और हम लोग को भी फेस करना पड़ा है इस तरह का। अब यहाँ दूसरी पे बात सर एनओसी क्या नहीं है मिल कि रहा है, यूएससी का रूल है, लेटर इशू नहीं हो रहा है। जी जी जी। यूएससी का रूल है कि 1 साल का प्रोबेशन, यहाँ ये लोग 2 साल का प्रोबेशन रखे हैं जी। वो और तो 5 इंक्रीमेंट अगर पीएचडी करके आप ज्वाइन किए हैं तो मिलना है, यहाँ देते ही नहीं है। देखिए, वो तो एक सर, कुछ ये लोग अपना बताएंगे कि इनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये तो एक लार्जर इशू है जो कि यूनिवर्सिटीज को टैकल करना पड़ता है, राइट। या जो लोग हैं अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट। और उसमें ऑब्वियसली जो है कम्युनिकेशन, यहाँ पर वो कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सबको सब जानकारी है, वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबको सब जानकारी है। अब जैसे सारी फैसिलिटी सर यही मिले तो कोई क्यों डीयू और कहीं दूसरी जगह जाने की सोचे? नहीं, वो नहीं, यहाँ पर अभी वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स हैं सर। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सब कुछ मालूम रहता है और जो लोग उससे अफेक्टेड होते हैं उनको भी सब कुछ मालूम होता है। जो हम लोग सिचुएशन झेल के आए हैं बिहार में, राइट। ये कहाँ पर थे सर बिहार में? हम मोतिहारी MS कॉलेज में थे। ओके सर। जी मैं जी। सर पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन 1 साल से यहाँ भागलपुर में हूँ। अच्छा, भागलपुर में। तो वहां पर हमने ये भी देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, सब मालूम होते हुए भी हम असमर्थ हैं करने में, हम नहीं कर सकते। आपको जहां जाना है जाइए, कोर्ट जाना है कोर्ट जाइए, लोग जाते भी हैं कोर्ट। जैसे आपके कलीग ने कहा, निर्भय सिंह साहब ने कहा कि कोर्ट में चले जाइए, आपको अपने ये भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रिटायर कर गए तो आपको पैसा तक मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ कई सिचुएशन देखा कि कोर्ट में जाने के बाद भी लोगों ने, राइट, कोर्ट ने कहा कि आप इनको पैसा रिलीज कीजिए, रिटायर हो गए हैं, इनका जो ड्यू पेमेंट रिलीज कीजिए, और इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि अभी हम असमर्थ हैं देने में, वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हुआ है। तो एक तो स्टेट लेवल का प्रॉब्लम है, वो कई बार हुआ है ऐसा, ऐसा भी हुआ है। जी, मेरा एक सवाल है सर। चेयर का भी प्रॉब्लम है सर जी। जब तक चेयर पे लोग पहुंचते नहीं तब तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस दिन वो पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वही बात उनका फिर पुरानी चबली चालू हो जाती है। नहीं, वो देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है ना। ये जो आप चेयर वाली बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप उनका कम्युनिकेशन पहले देख रहे थे, उनका कम्युनिकेशन अब देख रहे हैं, अब इसी से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये तो है। सर, इसी FIP करने के जब प्रिंसिपल साहब को मैंने आवेदन दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले एकेडमी स्टाफ कॉलेज होता था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, ये क्या क्या बोल रहे हो सर, नाम चेंज हो गया है, अब ये UGC HRDC हो गया है। हमने UGC के साइट पे खोल के पूरा दिखा दिया सर, ये देखिए सारा शेड्यूल AMU का बना हुआ है। हाँ, तो वो तो AMU के साइट पे मिलेगा। वो तो शेयर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, आप कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। यस, वो वहां तो हम अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है कि आप इतना कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं कि नए स्कीम के हिसाब से FIP कहलाता है, राइट। ये ऑनलाइन होता है और उनके दिमाग में ये होगा रेफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा होगा, और वही जाएंगे, 1 महीने का छुट्टी लगेगा और फिर आएंगे। वो सब उनका दिमाग में चल रहा होगा, राइट। था कि जब ऑनलाइन से है तो यहीं से कर लीजिए। जी,
मेरा एक सवाल है सर। हेलो जी सर, जी जी वीरेंद्र मैं वीरेंद्र डॉक्टर जी कुछ अभिषेक कुमार हाँ सिंह। सर जी वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी 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 Yes, sir. My name is Viren Kumar. जी I'm an assistant professor at BBT PG College, Ambedkar Nagar. जी जी I have a question, sir. जी My question has to do with Sherry Turkle's code. You क्या quoted Sherry Turkle. हाँ हाँ Yes. She has a word combination that reads as alone together. What is the effect of this word, or you can say the concept behind it? अच्छा अलोन टुगेदर का जो रेफरेंस दे रहे थे मतलब कि आप Yes, sir. देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से आप टुगेदर हैं और वैसे अलोन हैं Yes. गॉट इट हेलो। Yes, sir. हाँ यस सर, हाँ यस जी मैं डॉक्टर अभिषेक जी अभिषेक कुमार सिंह। हाँ सर अभिषेक जी जी मेरा जी एक जी प्रश्न है। सहायक आचार्य हिंदी एपीएन पीजी कॉलेज बस्ती, मैं वहाँ कार्यरत हूँ। जी ज्यादातर लोगों की समस्या है वो अपने हायर अथॉरिटी से अफेक्टेड है। जी सर हम लोग कोई भी बहुत तैयारी करके जाते हैं, अपने हायर अथॉरिटी को बताते हैं कि सर ये रूल आ गया, इसके तहत हमको ये मिलना चाहिए। वो भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं है। ऐसे छुट्टियों को भी लेकर है, अगर हम लोग यूजीसी गाइडलाइन ले जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि राज्य सेवा परिनियमावली काम करेगी, राज्य की ले जाएंगे तो कोई और लेके आते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग सर पावर जो आपने कहा पावर कम्युनिकेशन, उससे कैसे बचे? कभी कभी हम लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं। वो देखिए नुकसान होता है। मैंने कहा कम्युनिकेशन को हम दो एंगल्स देख रहे हैं राइट। एक पावर अनइक्वल कम्युनिकेशन के एंगल देख रहे हैं। ये सारी समस्या जो है वो पावर अनइक्वल कम्युनिकेशन में हो रही है। एक आदमी का स्टेटस हाई है, एक का स्टेटस उतना वो नहीं है राइट। रैंक हाई है, रैंक लो है। अब उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो एक बहुत डिफरेंट एंगल हो जाता है और उसमें जो कुछ विक्टिम्स होते हैं उसके कुछ फॉल आउट्स होते हैं। ये है इस रियलिटी को। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस किसी का बिजनेस जो सक्सेस हुआ राइट, तो उसके रीजंस यही रहा ना कि उन्होंने इन चीजों को टैकल करना सीखा। यस सर। उसमें ये सब चीजें अगर नहीं है तो फिर नहीं है और क्या, उसका तो फॉल आउट होगा ना, विक्टिम्स होंगे ना। अभी आप एग्रीव्ड होकर बोल रहे हैं ये चीज हमको नहीं मिल रहा है, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, प्रोविजंस है नहीं मिल रहा है राइट। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। यस सर। तो वो तो पावर डायनेमिक्स जहां चेंज करता है वहां पर इस तरह का फॉल आउट होगा राइट। हम लोग तो आपको एक सिचुएशन बता रहे हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात तो छोड़ दीजिए इस बात को। हम तो एक ऐसा सिचुएशन आपके डेटा को देख रहे हैं, यहाँ कम्युनिकेशन जो आया हुआ है टेबल पर उसको पढ़ने को और उसको शेयर करने को लोग तैयार नहीं है। यस सर। यही तो आप कह रहे हैं अभिषेक जी। यस सर, यही कह रहे हैं। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो अभी दूर की बात है। अभी तो समझिए कि गाड़ी तो आप तब पकड़ेंगे जब स्टेशन पर पहुंचेंगे ना, तब पकड़ेंगे। यहाँ तो स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यस तो हम समझ गए आपकी बात को, आई डू अंडरस्टैंड। बट हम क्या कर सकते हैं ये तो हम खुद नहीं हमको मालूम हो पा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि जैसे आपके बता रहे हैं कि आप लिख सकते हैं, कई बार लिखने से फर्क पड़ता है। तो किसको लिखें, कौन सुनने वाला है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए पहले। yes. तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, कभी कभी एक हमारे क्लास फेलो थे जो कि उनके दादी का उनको पेंशन नहीं मिलता था, तो वो सब कागज वगैरह सब बना हुआ था डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। तो वो आए और बोले कि भाई बहुत दिन से पेंशन ही नहीं मिल रहा, मेरे दादा का डेथ हो गया और ऐसे हो गया और उनको मिलना था। तो मेरे फादर ने कहा कि सबको लिख दीजिए आप कम्युनिकेशन, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ से लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीओ, सिविल, ये वो ट्रेजरर, ये जो भी होता है डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनरी देने वाले तो डिक्शनरी, चीफ सेक्रेटरी को भी दे दीजिए एक कॉपी। तो उन्होंने ऐसे कर दिया और वो करके बोले कि करके भूल जाइए, और होगा तो होगा, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसमें से कोई एक ऑफिसर था नीचे में ही, एसडीएम रैंक का इस डिस्ट्रिक्ट में ही, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आपका मिल जाएगा, आप आके कलेक्ट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गया वो चीज। तो वो टाइम भी, जमाना भी दूसरा था। अभी तो ऐसा है, हजारों प्रॉब्लम्स है
जैसे अभी का डेटा तो मुझे ये नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग एग्रीव्ड हैं। तो ये इस तरह का सिचुएशन तो तब भी था, अब भी है। पहले तो और भी नहीं था कम्युनिकेशन, पहले तो और भी बहुत बुरा कम्युनिकेशन था। अभी आपके पास व्हाट्सएप हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, वेबसाइट हो गया है। पहले कौन सा वेबसाइट था? आप इमेजिन कर रहे हैं, जिस टाइम हम लोग कॉलेज में काम कर रहे थे 25 साल पहले, तो वहां कोई वेबसाइट नहीं था। अब आप जाइए मोतिहारी से मुजफ्फरपुर कोई कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए, कि क्या यूनिवर्सिटी में क्या कम्युनिकेशन आया, जो बिहार के होंगे वो समझ रहे होंगे। सर मैं कहना चाहूंगी सर, मैंने 3 अप्रैल को ज्वाइन किया था जी अपने कॉलेज में, और सर अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली, और हम लोग यही दौड़ रहे यही हैं, हम 22 लोग हैं। ये सर अभी तक ये फीलिंग नहीं आई है कि हाँ मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ जी ज्वाइन किया। जी 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 यही है। तो आप वही उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं अथॉरिटीज को, वाइस चांसलर को, सर जबकि बाकी यूनिवर्सिटी फाइनेंस ऑफिसर को, राइट। सर किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। रिस्पांस नहीं है। देखिए ये शाली मैम, मैं हाँ डेफिनेटली लिखा होगा आपने। चेन्नई चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में हूँ, जी जी तो जी यहाँ जी पे भी सेम प्रॉब्लम था। जी मैंने 10 अगस्त 2022 को ज्वाइन किया था, और जी हमें सैलरी जो मिली वो 6 मंथ्स बाद मिली, फिर दूसरी सैलरी हमें 5 मंथ्स बाद मिली। तो अभी इस बार हमारा गवर्नमेंट से फंड आ गया है, तो आई गेस इस बार हमारी सैलरी कुछ यूनिवर्सिटी फंड से, कुछ गवर्नमेंट फंड से ऐड करके डॉक्टर आएगी। सरिता, तो ये हमने प्रॉब्लम जो है ना, जो आपने कहा, ये हमने उसको झेला वहां पर, कि जो ऐसे 6 महीने का अलॉटमेंट आता था वहाँ MS कॉलेज मोतिहारी में, तो कम्युनिकेशन देखिए क्या होता था। बोले 6 महीना के बाद तो मिलेगा, अभी तो पढ़ाइए ठीक से, हमारे कलीग बोलते थे 6 महीने के बाद। अभी आप बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा मत कीजिए, 6 महीने के बाद मिलेगा तो उसको खर्चा कीजिएगा, फिर 6 महीने से आगे 6 महीने का काम चलाइएगा। अब हम लोग यही समझे कि यही करना होगा। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम तो बदल बहुत किया। ज्यादा किया, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में थे। जी काम तो हमने बहुत ज्यादा किया, और अगर हमें बलिया के बाहर कोई भी मिलता था तो कहता था हमारी 1 महीने की भी सैलरी नहीं आती है, तो हम इतना बवाल कर देते जी हैं, जी जी आप जी जी कैसे बर्दाश्त करते हैं। बट जी हमारा ये मजबूरी था कि हम तो प्रोबेशन पीरियड में हैं, हम ऐसा कुछ जी भी अभी नहीं कर सकते हैं। कर नहीं सो वी सकते। टू वेट। बट हमने सभी को लिखा, चांसलर मैम को लिखा, FO को चेंज कराने के लिए लिखा। ग्रेजुअली सारी चीजें धीरे धीरे हो गई हैं, और इसमें अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। So Shalini ma'am, you can do your communications and keep your नहीं, patience. देखिए एक जो पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग जो कभी कभी कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मिस करता है, वो डॉक्टर शालिनी जो आप बता रही हैं सिचुएशन, उनकी सिचुएशन वो एक बड़ी जेन्युइन सिचुएशन है, कि जानते हुए भी लोग नहीं करते हैं। कि अब सर और पहले जानते हुए प्रयास नहीं किया करते तो हैं, उसमें पार्टी बहुत इफेक्टेड हो जाती है। जो भी आदमी एम्प्लॉय है वो तो इफेक्टेड हो जाता है, नो डाउट, राइट। और हर आदमी ऐसा नहीं है कि उस तरह से बोल सकता है, झंडा लेकर के नारेबाजी कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कोई आदमी सर प्रोबेशन, हर जगह की सिचुएशन अलग है, हर जगह हर तरह के लोग हैं, हाँ तो यही नहीं मैडम, कह लेकिन सकते। पूरे बिहार में लगभग स्थिति यही है। जी 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 इससे जब मैंने पहली बार ITR फाइल किया था, जी तो जिन्होंने वो ITR फाइल किया था, वो CO ने ये बोला कि मैडम बिहार में काम करती है क्या? अच्छा, वो समझ गए। अच्छा, वो बिहार के नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को समझ गए। सर हमारी